Okay, so let's begin with today's session. Like last time, I would also encourage today as well कि make maximum use of this time here to participate in the session by asking no questions or responding to the questions that I ask. By unmuting yourself, you can share your thoughts if you want to contribute something towards the session. So yeah, I mean that with that note, we will start with today's session. So today's topic is finalization adjustments. Just one thing very quickly before we begin. I think there are a few participants जिनका नाम user है HP है. अगर if you could please rename yourself, come on the video, it'll help us identify and mark who is here in the session user and HP. वरना हमें आपको waiting room में डालना पड़ेगा. So please you are renaming yourself. Okay, Yes. thanks. तो आज का टॉपिक है फाइनलाइजेशन एडजस्टमेंट्स एंड ग्रांट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली फॉर नॉन प्रॉफिट जो होता है. सो वी विल कवर दीज टू एस्पेक्ट्स टुडे. सो बिफोर वी बिगिन लेट्स एक बार हम जो फाइनलाइजेशन बोलते हैं अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन, उसका एक पूरा प्रोसेस फ्लो समझ लेते हैं. Okay, how does it start and where does it end? So typically when a transaction occurs, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो. कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे रिसिप्ट ऑफ डोनेशन हुआ है एक नॉन प्रॉफिट को, या एक कुछ नॉन प्रॉफिट ने कोई सर्विसेज दिए हैं, कोई पेमेंट नो दिया है एंड सो ऑन. नो व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप और इन द एंटायर प्रोसेस फ्लो ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग. फिर होता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है हम उसकी जर्नल रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे बुक्स में, based on the three golden rules that we discussed in the first session and also the accounting principles that we spoke about. उसके बाद होता है जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग. हर एक अकाउंट हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेजर में जाके वो पोस्टिंग करते हैं. उसके बाद होता है certain adjustment entries towards the end of the period in which you are doing accounting. जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, रिसीवेबल्स, एडवांसेस, प्रोविजंस, ये सारी चीजें हम ये करते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. Then, of course, there is reconciliation process for balances in the bank, donor list, vendor, staff, statutory dues के जो balances है उसके हम reconciliation करके payment होते हैं. Then there is review of ledger balances that happens. कोई negative balances है तो उसको rectify करना होता है. कोई मिस पोस्टिंग हुआ हो, कोई एरर्स कि गलती से किसी और लेजर में पोस्टिंग हुआ हो, तो वो सब रेक्टिफिकेशन होता है. उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है. टिपिकली ट्रायल बैलेंस इज वी इंश्योर दैट डेबिट टोटल ऑफ डेबिट्स मैचेस टोटल ऑफ क्रेडिट. और ट्रायल बैलेंस से हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं कोई मिसमैचेस हो तो. आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी टिपिकली प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कंप्राइजेस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट हो गया, रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो गए, नोट्स, डिस्क्लोजर्स. उसके बाद टिपिकली द ऑडिटर्स कम इनटू पिक्चर. द financial statements get audited by the auditors, books freeze हो जाते हैं, and then once the financial statements are finalized, these get approved by the board or the trustees in a non-profit. और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बेसिकली सबमिट करते हैं टुवर्ड्स वेरियस अथॉरिटीज. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे डोनर्स मांगते हैं सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड टिपिकली पब्लिक एट लार्ज. आई मीन एट सम प्लेस under some laws, financial statements have to be also uploaded on the website so that even the public can view the financial statements um, of the non-profit. ओके, सो टिपिकली दिस इज द प्रोसेस फ्लो जब भी हम अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन की बात करते हैं. तो आज के दिन पे हम फोकस करेंगे जब भी फाइनलाइजेशन होता है तभी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है, what are those typically, and how, and we'll try to cover and see the implications, accounting treatment for each of those scenarios. And no then will move on to the second part of the today's topic. So two topics we want to cover today. One is the accounting adjustment entries, और एक है fund accounting for grants. Between each of the topics we will also take a 5 minute short break
like it was no discussed in session 1. Okay, so let's begin with the adjustment entries. तो सबसे एक कॉमन एक एडजस्टमेंट एंट्री रहती है जो नो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जब भी बात होती है. सो व्हाट आर दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट प्लेस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. कैन एनीबॉडी अनम्यूट एंड शेयर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या है और क्यों करना जरूरी है? यस सर, गुड आफ्टरनून। यस. दिस साइड विजेंद्र। प्रीपेड एक्सपेंसेस सर वो होते हैं जो कि उसका जो कुछ हिस्सा इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कंफर्म करना होता है, राइट. और खर्चा जो है वो एक बल्क में रहेगा। तो ओके. व्हेन वी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट या स्प्लिट ऑफ द एक्सपेंस, but we should book in some part of in this financial year and some part of expense in the next financial year, राइट. like insurance, आपका राइट. एंटीवायरस राइट. का जो उसका लाइसेंस है, तो 5 महीना एब्सोल्युटली. इस फाइनेंशियल ईयर में चला, 5 महीना अगले फाइनेंशियल ईयर में चलेगा। तो इस तरह के एब्सोल्युटली. जहाँ पे खर्चे हो सकते हैं, उन खर्चों को हम प्रीपेड में इस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल जो खर्चा है वो यहाँ बुक करेंगे। अदर जो राइट. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा उसको हम प्रीपेड में डालना पड़ेगा। Absolutely, Vijendra. You are bang on. So prepaid expenses are those expenses basically जो हम एडवांस में पे करते हैं फॉर फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड. जस्ट टू समराइज, अभी ये जो ट्रीटमेंट है कि इस हमने पेमेंट तो कर दिया लेकिन दैट एक्सपेंस डजंट पर्टेन टू द करंट अकाउंटिंग ईयर बट फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर. तो ये इसके लिए अलग जो ट्रीटमेंट हम करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज बेस्ड ऑन द मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था सेशन 1 में. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट ये साल में कंज्यूम नहीं किया है बल्कि फ्यूचर ईयर्स में कंज्यूम होने वाला है, वी ट्रीट इट टिपिकली एज एन असेट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सपोज एक नॉन प्रॉफिट है जिसने 12 लाख रुपीज इंश्योरेंस के लिए पे किया हो ऑन 1 जनवरी. ओके, अभी ये 12 लाख रुपीज प्रीमियम है इज for 1 year period, 1 calendar year, from January to December. So typically on 31st March, only the 3 months ka benefit have been consumed. Jan, Feb, March, up to, if since the financial year closes on 31st March, only 3 years benefit is consumed in year one, and the remaining 9 years, 9 months ka benefit jo hai rupees to the extent of rupees 9 lakh rupees, we will have to report it as prepaid expenses. Okay. Let's understand this with an example of how will we account this for in our books of accounts. Okay, so at the time of bank payment, जब भी हम पेमेंट करते हैं, what will be the journal entry? Can anybody share what will be the journal that we will pass जब भी हम 12 लाख रुपीस का इंश्योरेंस पे करेंगे ऑन 1 जनवरी? सर, What will you एक्सपेंस debit? अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट फॉर 3 मंथ, जितना बनेगा 12 में से। प्रीपेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज, एंड टू बैंक और वेंडर जो भी वहाँ Perfect. अवेलेबल है। परफेक्ट, या. सो आपने ये कंबाइंड एंट्री बोली, दैट इज ऑल्सो राइट. टिपिकली व्हेन वी मेक द पेमेंट, बैंक पेमेंट, so if we break up the journal entry that Vijendra just said, तो typically when we pay 12 लाख रुपीज हम एंट्री बुक करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट द एक्सपेंस एक्सपेंस लेजर एंड क्रेडिट द गिवर विच इज बैंक इन दिस केस. फिर उसके बाद एक क्लोजिंग एंट्री बुक करेंगे एज ऑफ 31st मार्च टिपिकली. ओके, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने के लिए कि क्योंकि 12 लाख रुपए में जो एक्सपेंस हमने किया है उसमें से 9 लाख रुपीज आर प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ये हमको एडजस्टमेंट एंट्री एक बुक करनी पड़ेगी जहाँ पे हम प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर ऑफ एडवांस. सो बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. सो डेबिट द रिसीवर प्रीपेड एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इंश्योरेंस एक्सपेंस. क्योंकि हमने ऊपर जो 12 लाख रुपीज की नो फर्स्ट जो जर्नल यहाँ पे बुक किया है, वी विल हैव टू रिवर्स इट बाय 9 लाख रुपीज सो दैट करंट ईयर में 3 लाख रुपीज का एक्सपेंस बुक हुआ हो और 9 लाख रुपीज इज अकाउंटेड फॉर एज एन असेट, प्रीपेड असेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ओके, सो टिपिकली दीज आर द टू एंट्रीज दैट वी पास. उसका नेट इफेक्ट यही होगा जो विजेंद्र जी ने बताया था
कि इंश्योरेंस एक्सपेंस क्योंकि हमने 12 लाख रुपीज डेबिट किया है और क्रेडिट 9 लाख किया है, तो फॉर द ईयर वी आर जस्ट बुकिंग 3 लाख रुपीज एज एन एक्सपेंस। ओके, एनी डाउट्स, किसी को कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर? सर यस, एक छोटा सा सवाल है कि 12 लाख को जो इंश्योरेंस में हमने फर्स्ट में ही डेबिट कर दिया, so in the NGO we have to report our funding partners, our management, like some funding partners are required for quarterly basis, some funding partners require for 6 year 6 months and annual, so many kind of the reporting systems are available in the राइट, organization level. So राइट, when we book the 12 lakh rupees on the day first, सो जो हमारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर क्वार्टरली बेसिस पे गया तो वहां पे हमारा एक्सपेंस जो है वो ज्यादा बोलेगा। दैट्स वाई इन ओवर ऑर्गेनाइजेशन हम जो है राइट, उसको 31 मार्च को ना ले जाके सेम राइट, टाइम में ही प्रीपेड को निकाल के उतना ही खर्चा बुक कर लेते हैं सर। राइट, राइट, या करेक्ट, करेक्ट, आई गॉट इट। तो वो भी एक आप तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली जब भी हम डोनर को यूसी देते हैं, वी रिपोर्ट इट एज पर पेमेंट बेसिस। लाइक अगर हमने एक्सपेंस कर दिया है तो यूज डोनर वुड वांट कि आपने कितना खर्चा किया है, तो टिपिकली वी विल still report 12 lakh rupees in donor UC as amount paid towards insurance. But here what we are talking about is from financial statements preparation perspective, जहाँ पे आपका जो पीरियडिकली जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं उस बेसिस पे आप प्रीपेड बुक करते हो। जैसे इस एग्जांपल में 31 मार्च हमने कट ऑफ रखा है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को पास किया। लेकिन अगर आप मंथली क्लोजिंग कर रहे हो, आपके बुक्स अगर मंथली क्लोजिंग कर रहे हो, तो यस यू आर राइट व्हाट यू जस्ट सेड, then every month we will have to typically book as prepaid expense for the remaining period of that insurance policy, and then subsequent month में आपको उसको expense book करना पड़ेगा। That is how typically the accounting will get done. Does that help? Okay, I'll move on to Vijay ji. यस I'll सर, move on to the next यस slide. सर, Yeah. क्लियर फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू Yes, सो yes, yeah, sure. Yes, let's move on to the just like prepaid expense एक adjustment entry होगी। Another common example of adjust finalization के टाइम जो adjustment entries होते हैं, that is outstanding payables, और we also call it as accrued expenses। तो typically accrued expenses क्या होते हैं, कोई बता पाएगा? Briefly, what do you understand by accrued expense? सर। खर्चा तो इस साल का है, लेकिन पेमेंट हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना है। Absolutely, absolutely. Thank you. Yes. सो टिपिकली अगर कोई सर्विस दी गई हो आज के दिन पे बाय अ नॉन प्रॉफिट, बट पेमेंट बाद में हुआ हो, बाद में होगा, होने वाला है, टिपिकली सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस we typically book it as accrued expenses for which, but a payment has not been made today, it will made at a later stage. ऐसे expenses typically relate to the current accounting period, and hence we book it as accrued expenses on our books of accounts. ये जो अक्रूड एक्सपेंसेस रहते हैं और आउटस्टैंडिंग पेएबल जो हम बात करते हैं, दीज आर टिपिकली रिकॉर्ड एज लायबिलिटी इन अवर बुक्स, क्योंकि वी ओ द ऑर्गेनाइजेशन और वी ओ द वेंडर this money to be paid in future. Okay, typically that is what is the meaning of outstanding payable or accrued expenses. Let's understand this also with an example. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया एक नॉन प्रॉफिट को ऑन 31 मार्च से 12,000 रुपीज का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, लेकिन उसका पेमेंट हुआ होगा से 7th अप्रैल को। तो एज ऑफ 31 मार्च, जिस दिन आपके हाथ में इनवॉइस तो आ गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो आप उसको टिपिकली कैसे बुक करोगे आपके बुक्स में? ओके, सो व्हेन वी रिसीव द invoice, we will have to book it as expense in the on the date on which you are receiving the invoice, which is pertaining to the month of March. So, typically electricity expense है तो debit the expense which is electricity, and we will credit the giver of service, in this case like electricity expense payable account of जो representative account है for personal account, वो आप credit करोगे typically।
electricity expense payable will go into your current liability and electricity expense will go to your expense head on income expenditure. ओके, उसके बाद जब ये आप पेमेंट करोगे 7th April को, दैट इज व्हेन यू विल बुक योर पेमेंट एंट्री, सो विच इज electricity expense payable debit to bank. Okay, bank is basically credit the giver of the payment, which is bank, and debit the receiver of payment, which is the electricity company in this example. Is this clear? किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर? ये अकाउंटिंग एंट्रीज और जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हर एक अकाउंट आपके बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ पे दिखेगा, और जो हमने गोल्डन रूल्स डिस्कस किए थे सेशन 1 में, उसके तहत आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करोगे. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टच बेस अपॉन इन टुडेज सेशन. किसी को कोई डाउट है अब तक? सर एक छोटा सा सजेशन चाहिए आपसे कि ये तो हो गया जो हमारे को लाइबिलिटी रिलेटेड पार्ट होता है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग या अमाउंट पेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में बुक करते हैं इन एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट सर कुछ जैसे खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली खर्चे हैं वो, बट वो हमें ये बताया गया कि भाई उन खर्चों का आप जो है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी खड़ी नहीं कर सकते बिकॉज वो उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लोज करना था। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सर कि एक स्किल ट्रेनिंग का एक पार्ट चलेगा और स्किल ट्रेनिंग का बेच जो है वो चल रहा है अभी 1 जनवरी से शुरू हुआ और 5 अप्रैल को क्लोज होगा। तो 31 मार्च तक के जो खर्चे थे वो हमने 31 तक बुक कर लिए, लेकिन 5 दिन का जो खर्चा बच रहा है जिसमें हो सकता है ट्रेनर की सैलरी भी जा सकती है या उन ट्रेनीज के लिए कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं जो होंगे, तो उसका ना हम लोग लाइबिलिटी ये ओएसएल हम लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सर प्रोविजंस है या थोड़ा सा जानना चाह रहे हाँ, तो टिपिकली अगर 5 दिन ओवर दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं और आपको अगर पता है उसके एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, तो टिपिकली आप इसको प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो आपके बुक्स में एज ऑफ 31 मार्च. हम प्रोविजंस भी की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस. दैट इज हाउ यू बेसिकली अकाउंट फॉर सच काइंड ऑफ सिनारियोज. हैं? ओके सर। यस. सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और किसी को और कोई क्वेश्चन है अब तक जो डिस्कस किया हो? Hi, David. यस, This is सलागा. Talaka. So actually, I have a question related to previous point, prepaid expenses. तो या हाँ. prepaid expenses जैसे कोई ऐप वगैरह है, तो अगर हमें कोई बिल आता है अप्रैल में जून में, तो क्या उसका बुकिंग हम लोग मतलब आफ्टर दिसंबर वगैरह ऐसे भी कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी डोनर न्यू डोनर स्टार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट पीरियड उनका, तो वहां पे भी कुछ बुकिंग हो सकता है क्या पॉसिबल? तो आप बोल रहे हो कि इनवॉइस आया है अप्रैल अप्रैल में, लेकिन आप हाँ, बुकिंग इनवॉइस आया करोगे है अप्रैल में, दिसंबर में? अप्रैल टू मार्च के लिए। तो ओके. उसका थोड़ा बुकिंग कर दिया है अप्रैल में, पेमेंट पूरा कर दिया, पर अगर ठीक है. बुकिंग किया है अप्रैल में हम्म. एंड पार्ट बुकिंग जो है वो करना है दिसंबर के बाद वाले प्रोजेक्ट में, सो ओके. इज इट पॉसिबल बिकॉज वी आर यूजिंग दैट ऐप थ्रू आउट द ईयर? हाँ, सो अगर आप इवनली अगर आप डिफाइन कर सकते हो कि इसके वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसका बेनिफिट इवनली एवरी मंथ स्प्रेड हो रहा है, तो आप एज ऑफ 31 दिसंबर जो भी रिमेनिंग 3 मंथ्स है उसका प्रीपेड आप दिखा सकते हो आपके बुक्स में. दिखा सकते हैं। सो यस, यस, डू एब्सोल्युटली. वी नीड एनी different invoice or any note from that नो, 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 नथिंग नथिंग company लाइक दैट. or? नहीं, सो अगर कोई एक्सपेंस है जिसका आपको बेनिफिट 12 महीने के लिए मिलने वाला है, ओके, हाँ, लेकिन 9th मंथ में आपको उसको आपको 9th मंथ तक ही आपको दिखाना है कि ना एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कि कितना एक्सपेंस है और कितना प्रीपेड है, तो एज ऑफ 31 दिसंबर आप रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए भी प्रीपेड बुक कर सकते हो आपके बुक्स में. इट इज़ परफेक्टली अलाउड, उसमें कुछ इशू नहीं है. सो पेमेंट हमने पहले ही कर दिया है तो भी इट इज अलाउड? यस, यस, पेमेंट अगर आपने कर भी दिया है, हाँ, okay, it pertains to the entire 12 months, right? But in the 9th month, you can still show it as prepaid. Ravi, you have raised your hand.
Yeah, I just want to ask Shalaka a couple of questions. हम्म. Shalaka, your problem is that the donor is not accepting that the payment is made in April and hence you cannot show it because that is one set of challenges that non-profits face कि भले ही आपका अग्रीमेंट पूरे 12 साल का है बट बिकॉज आपने पेमेंट पहले किया है डोनर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यू वांट टू Yes, yes, दैट इज yes, योर क्वेश्चन राइट yes, yes, so yes. her question I don't think is related to I think her question is on the donor accepting um, the payment having been made for the whole 12 months together हम्म. and the expense being booked in April, but the donor wants to see utilization from their money. Like I think that is her question. गॉट इट सो सी इन दैट केस देन अब अगर आप 9 महीने की यूसी दे रहे हो डोनर को, हाँ. और अगर डोनर बोल रहे हैं कि आप 12 महीने का खर्चा मत बताओ, 9 महीने का ही खर्चा बताओ, राइट? इज दैट हम्म. करेक्ट? या सो इन दिस केस सी व्हाट यू कैन डू देन, प्रोबेबली देन यू कैन शो, आप 9 मंथ्स का एक्सपेंस दिखा सकते हो, बट उसके नीचे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एक्चुअल पेमेंट हैज बीन मेड फॉर द एंटायर 12 मंथ्स, बट आपके हाँ. 9 मंथ्स के लिए, ये यूसी के लिए, नो, दिस इज द एक्सपेंस दैट हैज बीन अक्रूड एंड दिस इज द रिपोर्टिंग दैट वी आर डूइंग. तो So, बेसिकली एक रिकंसिलिएशन आइटम आएगा व्हेन यू टाई इट अप विद योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द डोनर फंड्स. सो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और वन स्टेप अहेड कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ सर्वेज होते हैं, तो वो उसके लिए एक ऐप लिया हुआ है और वो उसका पेमेंट हम अप्रैल में ही कर देते हैं. मतलब देर आर टू एप्स एक्चुअली, एक तो है एचआर के लिए एंड एक है सर्वे के लिए. तो कोई कोई डोनर है ना, वो अप्रैल टू मार्च ऐसे ही नहीं रहते, फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं रहते. कोई कोई है वो जुलाई से आएंगे, कोई कोई है जो नवंबर में आएंगे, ऐसे भी है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो ये हम बुकिंग कर रहे हैं अप्रैल में है या जून में है, जो भी एचआर के लिए ले रहे हैं या सर्वे के लिए ऐप का जो हम लोग इनवॉइस लेके इमीडिएट पेमेंट भी कर रहे हैं, तो उनका बुकिंग हम सेम इस मतलब मंथली करना चाहिए, वो बेटर रहेगा. और दूसरा है कि जो नए डोनर आते हैं उनमें भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी बिल आता है तो हम पूरे अमाउंट का ऐड कर लेते हैं, बट कभी कभी ऐसे होता है कि एक डोनर के अंडर वो हम बड़ा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको डिवाइड करना होता है. तो कोई एफसीआरए रहेगा, कोई नॉन एफसीआरए वाला डोनर रहेगा, बट वो अमाउंट अगर ज्यादा है तो सबको एक 5% या ऐसे इतना ही अमाउंट दिखा सकते हैं, उसके आगे ज्यादा नहीं दिखा सकते. तो जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो अनएलोकेटेड रह जाता है. एंड देन वो अमाउंट हम दूसरे डोनर, जो नए डोनर आएंगे उनके अंडर भी बुक कर सकते हैं क्या? जैसे कोई नवंबर में आया है डोनर, दिसंबर में आया है, तो वो अप्रैल का बुक वहां पे भी बुकिंग दिखा सकते हैं क्या, सिंस वो ऐप हम थ्रू आउट द ईयर यूज करने वाले हैं. गॉट इट. तो ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंस जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो फाइनलाइजेशन का, आई थिंक उसके रिलेटेड नहीं है. आई थिंक इट इज मोर फ्रॉम अ डोनर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव कि हम्म. कोई एक्सपेंस अगर स्प्रेड आउट हो रहा है फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर कुछ अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस रहे 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 रहेंगे फॉर द प्रीवियस मंथ्स, और आपका डोनर यस. अगर सब्सिक्वेंटली आता है, तो वेदर यू कैन शो इट एज यस. यूटिलाइजेशन, इन द यस. यस. डोनर्स. यस. या सो देखो, इस केस में इट इज, everything depends on the donor's requirements. At some places some donors are okay with reporting, कि ड्यूरिंग द ईयर, एज लॉन्ग एज खर्चा हुआ हो अप्रैल मई जून में, अगर वो डोनर आता भी है नेक्स्ट ईयर जैन फेब में, सम डोनर्स आर ओके कि अपने खर्चा किया रहेगा आपके रिजर्व्स में से, लेकिन यू कैन शो इट एज यूटिलाइज फ्रॉम द फंड्स दैट यू विल रिसीव सब्सिक्वेंटली फ्रॉम दैट डोनर. कोई कोई डोनर्स बहुत हेल्पेंट रहते हैं कि नहीं, जिस दिन हम पैसा देंगे उसके बाद में ही आपने जो खर्चा किया है वही आपको रिपोर्ट करना होगा. सो इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डोनर्स कंडीशंस हियर रादर देन अकाउंटिंग रूल्स पर से. या किरण? ये सो कुछ मतलब ऐसे क्रेडिट नोट वगैरह भी रेज करके फिर ले सकते हैं एंट्री, अगर उनको दिखाना है कि डोनर को कि ये अभी उन्होंने क्रेडिट नोट बेसिस पे भी कर सकते हैं. हाँ, मतलब देखो, कर तो अभी करने के लिए तो
कर भी सकते हैं, बट क्रेडिट नोट इशू करने के लिए आपको सामने वाला वेंडर भी अग्री होना चाहिए, राइट? सो इट्स ऑल लाइक इफ्स एंड बट्स यहाँ पे. देर इज नो स्ट्रेट वे टू रिजॉल्व दिस. Can I just interject? I think Shalaka credit notes are to be issued when the service is not, sort of, you are not agreeable to pay or anything, right? So हम्म this is not a practice we would encourage, या. and it's not the right way to show utilization. The best way to do this, हम्म it calls for a lot of work, is that you do monthly accounting entries and the remaining you pass as prepaid. And then in each month you reverse and pass a accounting entry for that month. But because that is not practical, we pass the हाँ entry in one go, right? That is one part. Second is, if you have spent from your reserves, you can explain to the donor that this is spent from our reserves and this is हाँ not allocated to any other donor, हम्म right? You have to have that conversation, not credit note लेके आओ, credit note आप हम्म क्योंकि पेमेंट तो आप अभी भी नहीं सो करोगे, तो सो आपको तो यू आर करनी है. या सो यू आर तो सजेस्टिंग हम लोग उनको वो जो अनएलोकेटेड पार्ट है वो दिखा के उनको पूछ सकते हैं कि yeah, ये दिस absolutely. विल बी यूज फॉर Absolutely. That is what the question is of trust, right? The owner wants to know that you have not shown this utilization to somebody else. That is the question. ओके So as long as you can prove that, you show to the donor ना कि भाई ये पूरे साल का खर्चा है, हाँ कोई और हाँ donor पे नहीं कर रहा है. This is how we have bifurcated it. You ओके showcase that to them, and then it's an accounting entry. ओके Which you can do where you sort of credit the same ledger, debit the same ledger, but in your हाँ cost center you will reverse the general funds and you will add the donor, which we can discuss separately offline. I don't want to take more time right now. ओके Kiran, ओके you have ठीक raised your ग्रेट hand. या Yeah, Ravi, so I wanted to add, as you mentioned, that whatever we are entering in the financial report and regarding some funder, we just normally discuss with the funder before entering anything or mentioning any expenses to create a transparency. If they allow, then only we book. But before taking a decision, we just discuss with the donor or a funder that can we do this. So it's a trust also, transparency also, because they are giving us money and everything should be discussed before what we normally do. That's it. Yeah, absolutely, Kiran. I think it is more to do with the relationship with donor and how you convince the donor, or probably what works best for both the organizations. That is how these decisions are typically made. You rightly said that. Okay, I will move on to the next topic. So just like prepaid या outstanding payables होते हैं, एक और चीज़ है ना, provision for expenses. हमने अभी ब्रीफली बात किया एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग आउटस्टैंडिंग. सो प्रोविजंस टिपिकली वो होते हैं जब भी कोई एक्सपेंस फ्यूचर में पे करना हो, लेकिन आज के दिन पे उसका एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट नोन, या फिर बिल रेज नहीं हुआ हो, या बिल इशू ही नहीं हुआ हो, या फिर एक्सपेंस रेज टू द करंट ईयर बट पेमेंट विल बी मेड नेक्स्ट ईयर एंड अनश्योर है कि वो कितना अमाउंट का हो. बेसिकली दीज आर द टिपिकल conditions for calling an expense, for creating a provision for expense in the books of accounts. ये जो प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल दैट वी डिस्कस्ड इन सेशन 1. ओके, सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस इज, वन इज तो ऑडिट फी. क्योंकि ऑडिट टिपिकली होता है आफ्टर द ईयर एंड्स in the month of July, August, September. That is when audits typically happen, but that is for the previous financial year. So the question comes कि as of 31st March, क्योंकि ये ऑडिट फी जो भरी जाएगी आफ्टर ऑडिट इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बट बिकॉज दिस एक्सपेंस पर्टेन्स टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होता है कहीं पे तो इन दैट फाइनेंशियल ईयर. ओके, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन. दैट्स व्हाई वी क्रिएट प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस एज ऑफ 31st March, क्योंकि बिल रेज नहीं हुआ होता है. ऑडिट फीस भी टिपिकली पता होती है, लेकिन सर्टन किसी केस में नहीं होती कभी कभी, क्योंकि उसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी आते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो या, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल. देयर वन मोर एग्जांपल इज gratuity payment. Okay, typically gratuity is paid after completion of 5 years for all the employees. तो एवरी ईयर एक प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, बिकॉज नॉन प्रॉफिट टिपिकली डोंट नो the exact amount that would get become payable
in future towards gratuity. ओके, सो ग्रेचुटी प्रोविजन भी एक एक तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाते हैं एज ऑफ 31st March. Rohit, I wanted to ask whether, because we are creating provision for the expected expenses, so is there a possibility that expense cannot be happen in future, or we are just making Yeah. it just the expenses which will happen definitely? Nee, there has to be some certainty that this expense will occur. Okay, there can be a situation कि अगले साल में वो एक्सपेंस नहीं हो, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रोविजन देयर हैज टू बी सम सर्टेनिटी दैट दिस एक्सपेंस विल हैपन. Amount may not be cent% accurate. That is perfectly fine. Got it. और टिपिकल, और अगर ऐसा एक ऐसे भी एक सिनारियो हो सकता है कि आज के दिन में प्रोविजन तो कर लिया एज ऑफ 31st March, बट नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर कुछ पेमेंट आया ही नहीं, कुछ एक्सपेंस हुआ ही नहीं. सो इन सच केसेस वी टिपिकली रिवर्स दैट प्रोविजन. दैट इज परफेक्टली अलाउड. सर एक सजेशन चाहिए, सॉरी, हाँ. बट in the situation where the funding partner will close the partnership या वो प्रोजेक्ट ही क्लोज हो गया, बिकॉज हाँ. कई बार क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट 1 साल का भी होता है, कई बार लॉन्ग टर्म का भी होता है, 3 ईयर का भी हो सकता है, 5 ईयर का भी होता है. बट कई पार्टनर्स अभी तक जो हमने फेस किए हैं, कई बार कोई सडन भी एग्जिट हो सकता है, या एकदम से उनको पता चला कि यहाँ दिसंबर तक है, जनवरी से हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो उस समय फिर उस प्रोविजन का क्या करना है, रिवर्स बैक करना है या रखना है बुक्स में? नहीं, आप अगर आप पूछ रहे हो कि डोनर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से बोल पूछ रहे हो या? नहीं सर, जैसे कि एक पार्टनर है जिनका हमने ग्रेचुइटी का अमाउंट 5 एम्प्लॉय का मंथली ओके, बेसिस हमने ठीक है, कलेक्ट किया और प्रोविजन कैप्चर किया है, ठीक है. बट वो पार्टनर का अप्रैल में कंटिन्यूएशन नहीं रहा, ओके. तो फिर वो प्रोविजन हमें उनको देना पड़ेगा वापस अमाउंट, या नहीं, नहीं देना? तो देखो, टिपिकली जब भी प्रोविजंस हम बनाते हैं हम्म. फ्रॉम प्योर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, इट इज इट इज अ नोशनल एक्सपेंस, यू कैन से. इट इज नॉट दैट कि आपने पैसा, अब आपके पेमेंट हुआ नहीं है आज के दिन पे बेस्ड ऑन प्रोविजंस, राइट? तो ऐसे सिनारियो में डोनर, आप अगर डोनर को दिखा रहे हो कि ये खर्चा हो गया है, there itself is a question कि is that donor okay with such kind of reporting done in the UC, कि आपने पेमेंट तो किया नहीं है लेकिन आपने सिर्फ एक प्रोविजन क्रिएट किया है, और वो डोनर इज ओके विद सच काइंड ऑफ प्रोविजनल एक्सपेंसेस टू बी शोन एज यूटिलाइज्ड, मनी यूटिलाइज्ड. दैट इज वन. अगर डोनर वैसे अग्री हो रहा है, then in that case then it ends there, because you have created 31st March को एक provision based on certain assumptions, certain rules and principles followed in the accounting system, and you have disclosed it appropriately. So in that case then it shouldn't happen that ki next year donor asks back that money just because that period of donor agreement has ended. Typically, that is how you will have to treat this expense. ओके सर, बिकॉज क्या होता है सर कि कई बार एम्प्लॉय तो एग्जिट नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है, Correct, तो correct, एम्प्लॉय विल कंटिन्यू विद ऑर्गेनाइजेशन एंड मे बी वो अगले 5 साल बाद में उसका रिटायरमेंट हो या वो एग्जिट correct, करे, तो correct, एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ हमें तो वो प्रोविजन उसका ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ हमें कवर करके रखना correct, पड़ता correct, correct. है. Yeah. ओके. तो टिपिकल जो आप अगर जो प्रोविजन बना रहे हो उसके लिए एक कुछ तो एक मेथड फॉलो करते रहोगे, राइट, कंसिस्टेंटली, कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप प्रोविजन बना रहे हो. तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट एवरी ईयर कंसिस्टेंटली, then that is okay. Then that money should not go back to the donor. Then when the donor has already agreed कि they are okay with showing or reporting provision as money utilized. ओके सर, थैंक यू. या एक और इसमें एक एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. टिपिकली ये LIC पॉलिसीज जो होते हैं ग्रेचुइटी के लिए, LIC होल्ड्स सम काइंड ऑफ फंड ऑन बिहाफ ऑफ नॉन प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट पेज दैट मनी टू LIC. ओके, पर वो उस केस में NGO को पे करना पड़ता है वो फंड में वो पैसा विच इज हेल्ड बाय LIC.
और ऐसे केसेस में मैंने देखे कि वो जो पैसा हम भरते हैं एलआईसी को टुवर्ड्स ग्रेचुइटी फंड, वो हम टिपिकली अपने डोनर को यूसी में दिखाते हैं कि एज मनी यूटिलाइज्ड। वो भी एक जस्ट एक एग्जांपल है। इस केस में एक्चुअली पैसा बाहर जा रहा है, राइट, नॉन प्रॉफिट से वो एलआईसी के पास जा रहा है, तो हम सेफली उसको यूटिलाइजेशन में रिपोर्ट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स डोनर इज आल्सो ओके विद दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन अगर टिपिक सिर्फ अगर आप प्रोविजन बना रहे हो आपके बुक्स में, तो एडवाइजेबल है कि आप वो पैसा सेट असाइड करके रखें इन सम काइंड ऑफ एफडी और इंटरनल फंड फॉर अ नॉन प्रॉफिट। Yes, Kusum has also posted the scope of this provision may be quite wide. What's the purpose of provision? Yeah, so Kusum, the purpose of provision is that suppose imagine a situation कि आपका कुछ expense, some expense pertains to current financial year, लेकिन वो सर्विस अब तक दी नहीं गई है या ली भी नहीं है। ओके, कुछ बिल भी रेज हुआ नहीं है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वो एक्सपेंस विल पर्टेन टू दिस फाइनेंशियल ईयर एंड इट इज सर्टन दैट कि ये एक्सपेंस होने वाला है। जैसे टिपिकल एग्जांपल ऑडिट फी होता है। ऑडिट ऑडिट तो करना ही है, स्टैट्यूटरी लॉ है, राइट, ऑडिट तो करना ही है। लेकिन 31 मार्च के दिन ऑडिट हुआ नहीं है। ओके, होगा 6 महीने के बाद, लेकिन सर्टन है कि ऑडिट तो करना ही है और एक एक्सपेंस भी होने वाला है टुवर्ड्स ऑडिट। सो दैट इज व्हेन यू हैव टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस which will happen in future, but today amount is not known exactly, or maybe even the invoice has not been raised. Does that help, Kusum? Yes, yes, it does. Is it? I was wondering if the purpose is also to towards donor, the UC, the utilization certificate. Is it also towards that? I mean, it could have multiple purposes, right? See, UC is different. यहाँ पे हम जो डिस्कस करें, दिस इज मोर टू डू विद accounting and finalization of accounting, how we prepare the financial statements. Of course, UC also is derived from what we report in financial statement, लेकिन UC typically donor को क्या जानना रहता है through a UC is that if donor has given 100 rupees, how have you spent that 100 rupees? That is the main purpose of donor utilization report. तो Okay. अगर आपने ऑडिट फी आज के दिन पे पे नहीं किया हो, 31 मार्च के दिन आप सिर्फ प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन पे नहीं किया हो, तो टिपिकली सच एक्सपेंसेस आप यूसी में अगर रिपोर्ट भी कर रहे हो एज एक्सपेंस, यू विल स्टिल हैव टू राइट अ नोट बिलो कि दिस एक्सपेंस पर्टेन टू दिस पीरियड, बट इट हैज नॉट बीन स्पेंट सो फार, इट विल बी स्पेंट आफ्टर 6 months, कैश विल गो आउट आफ्टर 6 months. That is how you will have to report in your UC. Okay. Okay. Fine. Yeah, Ravi. I just want to add that Kusum, and for everybody else also, like Kusum, I know you may not be from an accounting background, but generally financial statements are, when they are audited, the auditor has to give a view that they are prepared in a true and fair view, right? And to also maintain the comparability of from period to period, you need to book every expense of that period, whether it is billed, not billed, prepaid, postpaid, like every scenario that you examine. The idea is that how do you maintain comparability and say that okay, every expense in this period is captured. So the way to do that is anything that you have paid extra, you move into prepaid. Anything that you may have paid last year, you bring back as something that you have paid last year. Anything that has not been billed so far, you create a provision, right? So all of this goes towards the final outcome कि इस साल का खर्चा क्या है, whether billed, not billed, paid, not paid, all of that aside. That is the concept of accrual basis based on which provisions are created, right? I'm just giving this one concept so that overall you understand that when you pick up the financial statements also, there is nothing that is left out that you could have paid for. Just because you've not paid for doesn't mean it's not an expense for that year. I hope that brings clarity. Yes, it does. Thank you. Sure. So let's look at the accounting entry that
typically gets passed for provisions. तो जैसे हम 31st March को ऑडिट प्रोविजन करते हैं तो इट विल बी लाइक ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट. You book the expense for the current financial year and you create a provision by crediting a ledger named as provision for audit fees. Provision will go on your current liability side in your balance sheet and audit fees will be your expense in your income and expenditure. Similarly, in this example that we just spoke about, gratuity का जब भी हम provision create करेंगे, gratuity expense will get booked income and expenditure में expense side, और जो provision for gratuity हम create करेंगे, it will go in our liability side because it's a future payment. It's a liability for the non-profit to be paid in future. Okay, let's talk about the key differences between outstanding and provision. So in case of outstanding expenses, uh, uh, amount is known at the time of making this booking this outstanding expense. लेकिन provision के time amount is estimated. Exact amount may not be known. Outstanding expenses में bill raise होना जरूरी है. There has to be some kind of bill that's when you can book it as कि ये payable है in future. Once the bill is raised. Provision के लिए bill raise करना जरूरी नहीं है. Even if there is no bill raised on the date, you can still create a provision. Okay. Outstanding expense में liability is very certain, but in case of provision, it is an estimated liability. Expense may be certain, but liability may or may not arise. Okay, in future. Suppose example अगर audit हुआ ही नहीं, okay, audit हुआ ही नहीं तो आपको provision रिवर्स करना पड़ेगा. ओके, ग्रेचुइटी पेबल आया ही नहीं फ्यूचर में, सब ने 5 साल के पहले ही छोड़ के चले गए एज एम्प्लॉयज, तो आपको वो पेबल आएगा ही नहीं, राइट? सो या दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड प्रोविजन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. एनीबडी, किसी को क्वेश्चंस है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन भी हम ईयर एंड के टाइम या क्लोजिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड वॉट एवर वी डिसाइड, जैसे मंथली बुक्स क्लोज होते हैं तो मंथली इसका नो अकाउंटिंग होना चाहिए, एनुअली क्लोज होते हैं तो एनुअल होना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनलाइजेशन एडजस्टमेंट एंट्री. तो लेट्स अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन फर्स्ट. हमने ब्रीफली इसके ऊपर बात भी की रहेगी in the first session, but let's understand what is depreciation. Basically, एक asset होता है जिसका एक useful life होता है. Okay, and based on the concept of matching concept and that we discussed, वो asset का cost basically we allocate across the useful life of the asset. And hence, depreciation is a concept in accounting terms where we allocate the cost for each of the year in which the asset is in use. Briefly, this is the meaning of depreciation. ओके, डेप्रिसिएशन क्यों होता है? एक तो यूसेज के वजह से एक फिक्स्ड असेट कौन सा भी रहता है जो यूजुअली नेचुरल वेयर एंड टेयर होता है किसी असेट का ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस कि असेट आउटडेटेड होने वाला है थोड़े साल के बाद, तो इसीलिए उसका एवरी ईयर उसका थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन होते रहता है. नॉर्मल लाइफ में आपके अपने कार्स होते हैं, द कार दैट वी बाय इंश्योरेंस, that also gets depreciated every year, right? That's why that insurance calculation that we do on car also is on the cost less depreciated value, or rather the net depreciated value is on which the insurance premium gets calculated every year in our personal life. Just an example to understand this concept of depreciation. या सो तो जब भी हम असेट खरीदते हैं, so instead of charging the full cost in the year in which the asset is purchased, uh, when no in for depreciation the cost is divided across the useful life. Okay, why this is needed is because imagine a situation कि आपने फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सपेंस बुक कर दिया फॉर दैट असेट. ओके, तो समवेयर you are overstating your expense in that year for that year, because even though you have paid entire amount in the year of purchase, the benefit of that asset will be over a period of time.
Hence, if you are not allocating the cost over the useful life, you are basically overstating your expenses in the first year. एंड देन सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर जब भी एसेट यूज हो रहा हो, तभी आपका जीरो एक्सपेंसेस आप करोगे, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सपेंस बुक कर दिया तो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. ओके, इसको थोड़ा और समझते हैं with one example and also methods of depreciation जो typically follow होते हैं for non-profits. तो one is written down value method, okay, which is also called as WDV or diminishing or reducing balance method. तो इस केस में क्या होता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज रहता है which is applied on the cost every year. Okay, and then every year, whatever the depreciated amount you reduce from the cost on the written down value, again next year का एक depreciation calculate होगा, no, on that written down value that gets calculated every year. Okay, in this case, तो depreciation decreases ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जो भी आपका यूजफुल लाइफ है असेट का, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो फिक्स रेट है दैट विल गेट कैलकुलेट ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू विच गेट्स reduced every year. Hence depreciation amount will also get reduced every year. तो एग्जाम्पल के तहत से समझते हैं, अपने फर्स्ट ईयर में अगर एक 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदी, एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, और WDV रेट है से 10%. ओके, सो टिपिकली फर्स्ट ईयर में आप 10% ऑन 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन बुक करोगे. उसका सो कॉस्ट विच इज 100 माइनस 10 विल बिकम 90. 90 विल बी योर रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन द एंड ऑफ द ईयर 1. तो आपका सेकेंड ईयर का आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे विल बी 10% ऑफ ₹90 एंड नॉट 100. ओके, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा आपका 9 रुपीज़ ऑन 90, 10%. सो 90 में से 9 रुपीज़ गया, तो सेकेंड ईयर के एंड में आपका WDV वैल्यू रहेगा 81 रुपीज़. सो थर्ड ईयर में आपका 10% विल गेट कैलकुलेट ऑन 81 रुपीज़ एंड नॉट 90. सो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 8.1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड. ओके, इस केस में आपका असेट वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि हमेशा देर विल बी अ फिक्स्ड परसेंटेज अप्लाइड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू as per the calculation. Okay, then there is one more method which is again allowed, is that straight line method. तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज वेरी सिंपल इन कैलकुलेशन. जो भी कॉस्ट है माइनस द स्क्रैप वैल्यू विच वी एस्टिमेट at the beginning of at the time of purchase for that asset, you reduce that and then divide it across the useful life of the asset. जो भी अमाउंट आएगा इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट विच यू विल डेप्रिशिएट एज अ फिक्स्ड कॉस्ट एवरी ईयर. सो सपोज इन द सेम एग्जाम्पल कि 100 रुपीज़ का आपने एक फिक्स्ड असेट खरीदा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, उसका स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट किया है कि 10 साल के बाद 10 रुपीज़ रहेगा. So 100 minus 10, 90 rupees is that value which you need to depreciate over the next 10 years. तो 90 रुपीज़ डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको 9 रुपीज़ जो डेप्रिशिएशन अमाउंट मिलेगा, आप एवरी ईयर 9 रुपीज़ ही डेप्रिशिएट करोगे नो फॉर द फिक्स्ड असेट. So these are the two methods that are followed for depreciation, and that's how non-profits are also allowed to uh, uh, follow this depreciation concept in the while making the adjustment entries towards the end. किसी का कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, WDV एंड SLM? Yeah, if you can explain SLM. या SLM मेथड में बेसिकली देर इज a fixed amount of depreciation calculated at the beginning of the at the time of purchase itself. Okay, and that fixed amount gets booked every year till the asset is in its useful life. ओके, तो अगर आपका 100 रुपए की फिक्स्ड असेट है, अगर आपका स्क्रैप वैल्यू वो फिक्स्ड असेट का एस्टिमेटेड है एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज 10 रुपीज़, तो आपका 90 रुपीज़
नो जो 90 रुपीज है, दैट यू विल हैव टू डेप्रिशिएट over the next 10 years by dividing as across the useful life. So suppose if there is 90 rupees to be divided across useful life of 10 years, every year 9 rupees आपको depreciation बुक करना है. अनलाइक जो ऊपर का मेथड जो डिस्कस किया WDV मेथड, उस केस में आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल चेंज. फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज रहेगा, सेकेंड ईयर में 9 रुपीज रहेगा, थर्ड ईयर में 8.1 रुपीज रहेगा. लेकिन SLM मेथड में एवरी ईयर इट विल बी 9 रुपीज इन दिस example that we are talking about. Yes, get it. Sir, can I, sir? Yes, yes, Vijendra. सर यहाँ पे SLM में ना, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाइज हो गया, जैसे नेक्स्ट ईयर से तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी लगता है कि एक फाइनेंशियल ईयर निकल गया, देन अप्रैल टू मार्च वी कैन कैलकुलेट इजीली. बट व्हेन द एसेट इज एडेड इन द मिडल ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर, वहां पे जो डे बाई डे का जो हिसाब करना होता है, वहाँ थोड़ा सा हमें मतलब फेस होता है कि जैसे 365 दिन का तो बराबर आ जाएगा, बट कभी एसेट फरवरी में ऐड हुआ तो हमें फरवरी के 28 डेज एंड मार्च के 31 डेज, तो 28 प्लस इतना दिन का ही डेप्रिशिएट करना है. Right. तो वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी चुक होता है. तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई चीज है सर, जो कि हम लोग जिसके थ्रू थोड़ा सा इजी कर सके उस चीज कैलकुलेशन को? श्योर श्योर या नहीं, तो इसका कोई ऐसा, इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो कैलकुलेशन के लिए आप एक एक्सेल मेंटेन करो विद फॉर्मूलाज, सो दैट जिस जिस डेट पे आप परचेज डालोगे उससे 31 मार्च तक वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको अमाउंट दे दे. आई मीन अनफॉर्चुनेटली देर इज नो अदर वे इन विच वी कैन कैलकुलेट. लेकिन या यू आर राइट कि अगर मिडल ऑफ द ईयर में कोई परचेज करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट ही डेप्रिसिएशन वो फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करके देना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इफ यू आर सेलिंग द असेट इन फ्यूचर यस, फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ सेल, वो प्रोपोर्शनेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. यस सर. एक्सेल तो हम मेंटेन कर रहे हैं सर, बस वो थोड़ा सा वहां पे क्या ना, कई बार अगर एक एक कॉलम में भी सिंटेक्स चूक गया या उसका वो दिक्कत हुई, तो वो वहां से फिर कैलकुलेशन प्रोविजन बुक करते समय कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हर साल मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा फेस होता है. राइट. दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू आस्क कि ऐसा कुछ कंसर्न नहीं, या अनफॉर्चुनेटली सजेशन आई है? एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच सॉफ्टवेयर विच विल डू दिस. हम्म. बट आई हैव सीन टिपिकली एक्सेल से यूज होते हैं टू सॉल्व दिस इशू. ओके सर, एक रिजर्व वैल्यू होती है, तो उसके बारे में आपकी तरफ से कुछ इनपुट्स? रिजर्व वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू बोल रहे हो आप? स्क्रैप वैल्यू तो आपने फिक्स कर लिया स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से, हाँ. बट जैसे कि एक रिजर्व वैल्यू है कि जो जीरो नहीं हो सकता, जिसमें आपने ऊपर जैसे कंप्यूटर हमारा एसेट काइंड ऑफ एसेट का कैटेगरी हाँ. है, तो उसको हमने कंप्यूटर्स में ले लिया. कंप्यूटर को हमने बोला है कि 4 ईयर तक का उसका लाइफ है, हम्म. बट उसका हमने ना रेसिडल वैल्यू रखते हैं हम लोग एक उसकी 5%. करेक्ट. करेक्ट. उस तो उस वैल्यू से नीचे वो नहीं जाएगा, तो वो भी फिर करेक्ट. एक तरह से हम लोगों को रखना पड़ता है. करेक्ट. करेक्ट. सो दैट इज नथिंग बट स्क्रैप वैल्यू ओनली. सो यू ओके, इज जस्ट वो नॉमेनक्लेचर अलग है. इधर मैंने स्क्रैप वैल्यू यूज किया है, बट रेसिडुअल वैल्यू इज ऑल्सो सेम सेम थिंग. ठीक है सर, थैंक यू. यस यस. और कोई क्वेश्चंस है किसी के? ओके. तो इसका क्लोजिंग जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं एवरी ईयर, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप डेप्रिसिएशन यू डेबिट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, डेबिट द एक्सपेंस. एंड फिक्स्ड असेट को आप क्रेडिट करते हो बिकॉज समवेयर नो फिक्स्ड असेट इज अ रियल अकाउंट. So credit what goes out. Here the value of fixed asset due to its usage is reducing. So that's why you credit fixed asset. So this is the journal entry that you pass for booking depreciation. Okay. So let's understand on the income side. Okay. This is also one of the no important concept what we need to understand about income accrued. जो टिपिकली एंड ऑफ द ईयर हम उसका नो अकाउंटिंग करते हैं. कोई बता पाएगा व्हाट इज इनकम अक्रूड एंड व्हाट आर द टिपिकल एग्जांपल्स? जिसने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, कैन समबडी अनम्यूट एंड नो शेयर योर थॉट्स कि व्हाट इज इनकम अक्रूड और इनकम रिसीवेबल फॉर अ नॉन प्रॉफिट टिपिकली?
या यार ऐसी ऐसी इनकम जो अभी तक हमने अर्न तो कर ली है, लेकिन उसका पेमेंट हमें अभी तक मिला नहीं है। ओके, करेक्ट करेक्ट, या आयुष इज ऑल्सो रिटर्न इंटरेस्ट, यस। इंटरेस्ट इज अ टिपिकल लाइक सैलरी एग्जाम्पल। हो गई कि। हाँ। करेक्ट, इंटरेस्ट इज अ टिपिकल एग्जांपल फॉर अ नॉन प्रॉफिट, क्योंकि हम सब एफडीज रखते हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लेकिन एज ऑफ 31 मार्च नॉट नेसेसरली वो इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में हिट हुआ ही हो। कभी कभी फर्स्ट यस अप्रैल यस। को हिट होता है, या सब्सिक्वेंटली हिट होता है, राइट? कभी आपने फिक्स डिपॉजिट ऐसे बनाया है कि you only receive interest at the end of maturity of that fixed deposit. So इस केस में आप क्या करोगे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट आपको इंटरेस्ट कभी आएगा नहीं आपके बैंक अकाउंट में, बट दैट डजंट मीन दैट यू डोंट अकाउंट फॉर दैट interest that has accrued on your fixed deposit but not received by you. So these are the typical examples जहाँ पे ये इनकम अक्रूड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका बुकिंग करना भी जरूरी है। Okay, so yeah, so income receivable is something that is earned during the year but not yet received. Again, it is also recorded as per the accrual concept that we discussed in session 1. भले ही पैसा नहीं आया हो, आपको बुकिंग उसका करना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल इज कि कोई नॉन प्रॉफिट ट्रेनिंग्स देता हो फॉर द बेनिफिशियरीज, और कुछ नॉमिनल फी भी कलेक्ट करता हो फ्रॉम द बेनिफिशियरीज। तो इस केस में अगर आपने मार्च मंथ में ट्रेनिंग दी हो, लेकिन पेमेंट आपको अप्रैल या मई में मिलने वाला हो फ्रॉम द बेनिफिशियरी, नाउ बिकॉज यू हैव incurred the expense since you have given the training in the month of March, आपको मार्च मंथ में वो ट्रेनिंग एक्सपेंस बुक करना, सॉरी इनकम, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विस दैट वी आर गिविंग टू द बेनिफिशियरी। तो अगर आपने मार्च मंथ में वो ट्रेनिंग ऑलरेडी दी हो और इनवॉइस भी रेज किया हो बेनिफिशियरी के ऊपर, तो यू विल हैव टू बुक that invoice in your books of accounts as on 31st March itself, saying that this income has accrued but not received yet. Okay, it will be received in the subsequent month, but क्योंकि वो income pertains to the month in which you have given the training, you will still have to book it as your income or income accrued in the current financial year. Okay, so if we talk about the accounting entries, कोई बता सकता है कि एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? व्हाट विल यू डेबिट एंड व्हाट विल यू क्रेडिट? स्पेशली दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड सो फार, कैन समबडी शेयर? आप क्या डेबिट करोगे और क्या क्रेडिट करोगे? Interest accrued to अरे, interest income. करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। सो एफडी इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अक्रूड। इंटरेस्ट इनकम आप इनकम साइड में लेके जाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट द इनकम, गोल्डन रूल अप्लाई होता है। एंड एफडी इंटरेस्ट रिसीवेबल विल बी योर करंट असेट बिकॉज इट इज रिसीवेबल, आपको कल जाके वो पैसा मिलना है, सो डेबिट द रिसीवर, दैट इज द गोल्डन रूल दैट विल बिकम एप्लीकेबल। सिमिलरली ट्रेनिंग फी जब भी आप जो रिसीवेबल बनता है, तो द डेट ऑन विच यू इशू द इनवॉइस यू विल बुक इट एज ट्रेनिंग फी रिसीवेबल debit to training fees. Training fee will be booked as income in your income and expenditure, and training fee receivable will go to your asset side under current asset. किसी को कोई questions है so far on the adjustment entries that we discussed? Okay, so there are some other few adjustment entries which are I also. have one question, sorry. Yes, Kusum, yeah. I know we have dealt with this in the previous session, but can you quickly, somebody tell me difference between the current asset and fixed asset? Yes. So fixed asset is something like you are going to use it in future, लाइक इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल हो गई, कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर लेते हैं, विच यू आर विच द बेनिफिट ऑफ विच यू आर गोइंग टू डिराइव इन फ्यूचर, दोज आर फिक्स्ड assets. Okay. Okay, whereas current assets are those assets which are uh, which are going to be realized within 1 year. सो एग्जाम्पल अगर कोई, ये जैसे एग्जाम्पल हमने ये ट्रेनिंग फी की बात की, ओके, ये अपने ट्रेनिंग तो दे दी,
and this money you are going to receive in the next 2 months. Okay, so this is a typical example of current asset. This is your asset which you are going to realize in in the next within a year or so. ओके, बट आज के दिन पे वो कैश नहीं है, बट स्टिल इट इज इक्विवेलेंट टू कैश. वन मोर एग्जांपल इज बैंक बैलेंस. आपके बैंक में जो पैसा है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ करंट असेट. you can easily convert it into cash, right? So yeah, I mean these are Okay. the typical example of current Sure. assets. Sure. Yes. So moving on to the other key adjustment entries that we all need to be aware of is that कभी कभी प्रायर पीरियड आइटम्स रहते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के कोई एक्सपेंसेस हुए हो जो बुक नहीं किए थे लास्ट ईयर, बट समथिंग दैट वाज अनअर्थ इन दिस ईयर. तो आपको प्रायर पीरियड आइटम की तरह भी उसका बुकिंग और एडजस्टमेंट करना होगा इन दिस फाइनेंशियल इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच you realize that something was missed in the previous year. So these are typically called as प्रायर पीरियड आइटम्स. इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड ऑल्सो इन द नोट्स टू अकाउंट्स टू गिव अ ब्रीफ अबाउट व्हाट दिस एक्सपेंसेस पर्टेन टू. फिर होता है एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और बेनिफिशियरी, या एडवांसेस पेड टू वेंडर. ये सारे भी एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करते हो. जो भी जो भी वाकई में जो एडवांसेस पेड है या रिसीव्ड है, दैट दैट शुड बी गेट अकाउंटेड फॉर करेक्टली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट. फिर होता है जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप क्लोज करते हो, तो जो भी एंड में नेट सरप्लस या डेफिसिट जो बचता है, दैट ऑल्सो गेट्स ट्रांसफर्ड टू रिजर्व एंड सरप्लस इन योर बैलेंस शीट. ओके, ये एंट्री हमारे सॉफ्टवेयर टिपिकली टेक केयर ऑफ एट द बैक एंड. ऑटोमेटिकली वो नो whatever the balance remains, surplus or deficit in income and expenditure, will get transferred to your balance sheet on the liability side. But we as accountants, we all need to understand that why this is so critical, that why that surplus or deficit needs to be transferred in the first place, to the balance sheet, because that surplus or deficit pertains to the current financial year. Whatever surplus has been derived or deficit is done, you basically take it to your reserves and surplus uh, at the end of the financial year. ओके, फिर उसके बाद एक और है कि ग्रांट अकाउंटिंग. जैसे ग्रांट अकाउंटिंग में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. व्हाट इज ग्रांट अकाउंटिंग एंड उसमें क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम सबको पता होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So yeah, I mean these are some of the common and important finalization concepts that we wanted to discuss today. किसी को कोई questions, doubts है अब तक जो हमने डिस्कस किया हो? Anyone has any questions or any confusion, any doubts we can discuss before we move on to the next topic. Yeah. Shalaka, are you saying something? Yeah, actually, ग्रेजुएटी रिलेटेड एक क्वेश्चन था. सो हाँ. ग्रेजुएटी जो है वो हमें किस तरीके से बुक कर सकते हैं, एंड एवरी ईयर उसको कंपलसरी बुकिंग दिखाना चाहिए क्या? क्योंकि मतलब जो अभी नया रूल आया है कि उस हिसाब से किसी किसी को 1 ईयर में भी एप्लीकेबल है, किसी को 5 इयर्स होते हैं तो एप्लीकेबल है. तो उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं? एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? वो डोनर रिलेटेड है, सो पहले अगर ये बता देंगे तो भी चलेगा. हाँ, तो या सो सी ग्रेचुइटी प्रोविजन 100% रिकमेंडेड है, आपके बुक्स में अकाउंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेचुइटी इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि हर एक नॉन प्रॉफिट को भी वो एप्लीकेबल है. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय 5 इयर्स तक काम करता है, तो 5 इयर्स के बाद वो लायबिलिटी आपकी नो you will be liable to make that payment, right, to those employees. So it is 100% recommended as a good practice to create provision year on year.
उसके कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी अभी देर आर वेरियस वेज टू कैलकुलेट दैट. देर इज इनकम टैक्स में एक फॉर्मूला दिया गया है. देन देर इज ऑल्सो लाइक सम ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन एज फ्रॉम एन एक्चुअरी, फ्रॉम अ क्वालिफाइड एक्चुअरी, जो आपको आपके नो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, एट्रिशन रेट, सारे स्टैटिस्टिकल मेथड से कैलकुलेट करके एक अराइव करते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स you can adopt. Okay. Yeah, I mean there are multiple ways in which gratuity can be calculated. Yes. So let's move on to the second topic for today, which is fund accounting for grants. Okay, ये बहुत यूनिक टॉपिक है and very critical for we as non-profits to to be aware of what is fund, how is the accounting done for funds, and how do we report grants. तो कोई मुझे बता पाएगा what is the meaning of fund? What do you understand by the term fund? Whatever you understand or you have read, or you know uh, can somebody unmute and share? Okay. फर्स्ट मतलब जो हमको पैसा लगता है हमारे डे टू ऑपरेशंस पूरे करने के लिए, उनको अच्छी तरह से निभाने के लिए उस पैसे का जरूरत होता है. इनके लिए प्रोजेक्ट चलाने के लिए एनजीओ आर रनिंग सब प्रोजेक्ट्स. सो उनका डे टू डे एक्टिविटी रन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, वो जो डोनर देते हैं. दैट्स विल बी, आई कैन से दैट Okay. दीज आर फर्स्ट. Got it. Yeah. Sure. So see, typically the meaning of fund is that fund is a pool of money set aside for specific purpose. In simple language, फंड होता है, एक लायबिलिटी होती है फॉर अ नॉन प्रॉफिट कि हमको स्पेंड करना हो, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द मनी फॉर स्पेसिफिक पर्पस. It is a liability of the non-profit to spend that money in for that specific purpose. Okay, fund is not something that we can treat it as income unless it is spent. जब तक हम खर्चा नहीं करते जो फंड जो हमको मिलते हैं फ्रॉम द डोनर्स, तब तक उनको इनकम नहीं बुक कर सकते. Okay, typical examples of funds are restricted donor funds or donation with specific purpose. Chat box में किसी ने लिखा था ना donation grants, but donation grants received for specific purpose is is something that we call it as fund, and that's how we report it in our financial statements. Okay, now no, with what we understand what fund is, तो fund accounting क्या होता है is nothing but a system of accounting in which the funds get accounted for, is the fund accounting that we would talk about in the subsequent slides. ओके, इसके एडवांटेजेस ये है कि आप फंड अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो देर इज प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स वर्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स. This also helps accurately tracking utilization of just restricted funds that a non-profit receives, and this also ensures somewhere in building that credibility कि ये जो fund है it is used towards the purpose for which it is actually received by a non-profit. So these are the typical advantages of fund accounting. Okay, so before we move on to the next slide, one reflective question I wanted to just check. uh, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज के दिन पे कौन सा मेथोडोलॉजी यहाँ पे फॉलो कर रहे हो? इज इट लाइक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विथ फंड अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस विदाउट फंड अकाउंटिंग, कैश बेसिस, और यू आर नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या फॉलो हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? कैन यू जस्ट टाइप A, B, C और D इन द चैट बॉक्स? ओके. Okay, A and C. Shalaka, you have mentioned A and C, which is accrual and cash. I'm not sure. FCRA and domestic. So for FCRA, it's cash basis, Okay, and for domestic, we are using fund accounting. okay, sure. Then B, okay, without fund accounting, not sure. Got it. ठीक है, perfect. So yeah, there is a mix of
mix of people, somewhere somebody follows already is following fund accounting, but whereas at some organizations accrual basis accounting follow हो रहा है लेकिन fund accounting नहीं follow हो रहा है. So let's all understand this concept of fund accounting and what are the typical treatment that we all need to be aware of. तो पहले तो इसकी applicability देखते हैं. ओके, तो फंड अकाउंटिंग ये एक चीज है जो रेकमेंडेड प्रैक्टिस है. इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो, बट इट्स अ स्ट्रांगली रेकमेंडेड प्रैक्टिस. ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन वही फॉलो कर सकते हैं जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं. जो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं इनके लिए ये फंड अकाउंटिंग एप्लीकेबल नहीं है और प्रॉब्ली फॉलो नहीं कर सकते. इट इज एन अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट. ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड फंड्स या ग्रांट्स यूज रिसीव करते हो इनके लिए ये बेसिकली फॉलो करना एज अ बेस्ट प्रैक्टिस है. करंटली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो इशू किया है, हमारे कंपनी लॉ में लिखा है और आईसीए ने भी रेकमेंड किया, AS 12, विच टॉक्स अबाउट विच इज टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स. लेकिन ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिलेटेड ही बात करता है, नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट ग्रांट्स. But there is one technical guide on accounting which is issued by ICAI जो स्पेसिफिकली नॉन प्रॉफिट्स के लिए बनाया गया है फॉर नॉन प्रॉफिट्स टू रेफर टू, जिसमें ये फंड अकाउंटिंग का recommended practice दिया गया है, that how a non-profit should report restricted, unrestricted, and what is the accounting treatment that we have to follow when it comes to non-profit. So even those who are not following currently in your current organizations, it is a best practice that we all need to be aware of, and that's what we will be discussing in the subsequent slides. Okay, so before we begin, एक की कॉन्सेप्ट होता है फंड अकाउंटिंग में, एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स. सो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स वो फंड्स है जिसका विच एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स without any specific restrictions or terms and conditions attached to. ओके, टिपिकली ये वो फंड्स होते हैं जो हम जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो accumulate फॉर एज अ सस्टेनेबिलिटी फंड फॉर फ्यूचर. You don't have to, there are no conditions attached by the donor ki you have to spend before 31st March or within 1 year or 2 years, or you have to specifically spend this towards project A only, or towards purchasing fixed asset, or towards purchasing property only. There are no conditions like that attached. These are typically called as unrestricted funds. And restricted funds are those funds which come with a specific purpose, कि आपको ये इसके लिए ही यूज करना है, आप और किसी के लिए वो फंड्स यूज नहीं कर सकते, किसी रीजन के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके, स्पेसिफिक पर्पस हियर कुड बी कि कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है नॉन प्रॉफिट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कुछ कर रही है एज पर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफ द नॉन प्रॉफिट, उसके लिए कुछ पैसे मिले हैं, तो दैट इज दोज आर टर्म्ड एज restricted funds. Okay, now what happens if a non-profit does not adopt fund accounting? Okay, what are the typical, so to understand fund accounting, let's understand जो अभी हम fund accounting follow नहीं कर रहे तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है हमारे रिपोर्टिंग में. ओके, सो इमेजिन अ सिचुएशन कि एक नॉन प्रॉफिट को 100 रुपीज आया है रिस्ट्रिक्टेड फंड इन द फर्स्ट ईयर. ओके, और क्योंकि आप फंड अकाउंटिंग नहीं फॉलो कर रहे हो तो यू विल एंड अप रिपोर्टिंग 100 रुपीज जो आपको फर्स्ट ईयर में मिले हैं एज इनकम. ओके, उसमें से आपने से 20 रुपीज ही स्पेंड किए हैं ईयर 1 में, और रिमेनिंग 80 रुपीज आपने स्पेंड किए हैं ईयर 2 में. सो इन ईयर 1 इफ यू आर नॉट फॉलोइंग फंड अकाउंटिंग, आप 100 रुपीज इनकम दिखाओगे और 20 रुपीज एक्सपेंस दिखाओगे. ओके, जिसके वजह से आपका सरप्लस दिखेगा ईयर 1 में 80 रुपीज. ओके, एंड नेक्स्ट ईयर जब भी आप 80 रुपीज स्पेंड करोगे तो नेक्स्ट ईयर में आपको डेफिसिट दिखेगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑफ 80 रुपीज, अज्यूमिंग देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शन्स. ओके, सो फर्स्ट ईयर में आपको सरप्लस दिख गया क्योंकि आपके 100 रुपीज इनकम बुक कर दिया था, 80 रुपीज का सरप्लस आ गया. नेक्स्ट ईयर में बिकॉज देर इज नो अदर इनकम, you have just spent that 80 rupees which were carried forward from previous year.
आपको नेक्स्ट ईयर में डेफिसिट दिखेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 80 रुपीज. So the question is this giving the right picture? Is it giving a true and fair picture, or probably the right reporting picture in terms of usage of funds that were restricted in the first place? Okay, the answer is basically no, because फर्स्ट ईयर में आपने आपका इनकम ओवरस्टेट कर दिया हो, आप कर दिया है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने उसको अंडरस्टेट कर दिया है. Okay, so this is what the fund accounting methodology tries to fix. Okay, by reporting that much income, only that is what is spent in year one. Okay, and जो year two में जितना आपने spend किया हो उतना ही आप income book करे हो year two में. So restricted grants get split across year one and year two in terms of reporting it as income in your books of accounts. This is also somewhere derived from that matching concept that we spoke about in session one. Okay, हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, but so far any questions, any thoughts? Okay, so we'll move on to the next slide. हम एक केस सिनेरियो से भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझेंगे. Okay, before that, there is one reflective question. So, in your books of accounts, what would be the journal entry that you will pass for restricted grants? जब भी आप restricted grants receive करते हो in the first year, आप उसका journal क्या पास करोगे? Is it bank account debit to donation income on your income side, or bank account debit to earmarked fund on your liability side, or you're not sure in this, or you're not sure about what accounting treatment you will do? Is it A or B or C? Okay, Alisha, Rajiv have responded as B. Okay, sure. C, B. Yeah, so in case of fund accounting, the right answer is B. You will not report it as your income in the first year, but you will show it as your liability in the first year. So bank account debit to earmark fund is the accounting entry that you will pass in the year one. Okay, those who are not sure, or understanding this concept of fund accounting for the first time, we will discuss a case scenario now with an example. It will just help us understand this concept better. ठीक है, तो सपोज एक नॉन प्रॉफिट है जिसका नाम है एबीसी फाउंडेशन. ओके, वो डेडिकेटेड है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स में इन इंडिया. सपोज दिस नॉन प्रॉफिट रिसीव्स 1 lakh rupees as grant from say donor X, okay, for a specific project called as environment project. Okay, simultaneously the non-profit also receives donations of rupees 2 lakh rupees from small individuals. छोटा छोटा 1,000 rupees, 5,000 rupees दे के इंडिविजुअल से अक्यूमुलेट किया है 2 lakh rupees, and these are all like general purpose donations. The NGO is free to use this, so these are unrestricted funds. So ABC Foundation receives 1 lakh rupees as restricted funds from donor X and 2 lakh rupees as unrestricted fund. So let's understand what will be the accounting treatment generally, and also when the NGO is following fund accounting, what will be the additional accounting treatment that we all need to be aware of. Okay, so let's understand the first transaction, which is quite straightforward. And know what we discussed, entry for grant received from donor X, जो हमने अभी बात की थी, it will be straightforward bank account debit 1 lakh rupees to earmarked fund donor X. Okay, 1 lakh rupees. ये earmarked fund will be your liability. It will not be booked as your income in the year of receipt under fund accounting. It will be your liability. So it will be booked separately on your balance sheet liability side as under earmarked fund का head में donor X के नाम पे. ओके, जो हमने अभी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछा था, यही एंट्री हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी फॉर रुपीज 1 lakh rupees, बिकॉज दिस इज रिस्ट्रिक्टेड फंड. ओके, देन सेकेंड एंट्री वुड बी फॉर द डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स. सपोज 2 lakh rupees इंडिविजुअल डोनेशन आए हैं
एक just for simplicity sake, this is just one journal entry that we will pass. Bank account debit to donation individual account. Donation individual account will be shown on your income and expenditure. Income side 2 lakh rupees, and bank account will get hit on your in your current assets, asset side of your balance sheet, 2 लाख रुपीस. इसमें एक हम रेकमेंड करते हैं हमेशा, जो आपने देखा रहेगा, डोनेशन अंडर हाइफन इंडिविजुअल अकाउंट के तहत ना एक लेजर खोला है. सो इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि आप भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डोनेशन आपको आता है, आप उसको कैटेगराइज करें इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स और CSR डोनर्स और इंस्टीट्यूशनल डोनर्स. क्योंकि आप जब भी आपका इनकम टैक्स रिपोर्टिंग करते हो, आप जब भी अपना ITR भरते हो, टैक्स रिपोर्ट भरते हो, उसमें स्पेसिफिकली वो ब्रेकअप पूछते हैं. So that time we usually struggle to find and do that working to bifurcate how many are individuals, how many are corporate donors, or how many are institutional donors. So it is, as a best practice, you can create separate ledgers at the time of booking itself, in your tally, so that it gets correctly booked at the point of source itself. ओके, सो ये दो एंट्रीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स के. ओके, जो आप पास करोगे. ओके, सो इन द सेम केस, अभी सपोज कि ये NGO को 50,000 रुपया इनकर करना पड़ा एज एन एक्सपेंस टुवर्ड्स प्रोफेशनल फीस टुवर्ड्स दिस एनवायरमेंट प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय डोनर X. सो जो 1 लाख रुपीज रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आया है, उसमें से 50,000 रुपीज प्रोफेशनल फी के तहत एक एक्सपेंस किया है दिस NGO ने. ओके, एंड देर इज वन मोर ट्रांजैक्शन दैट अकर्स. सेम फंड से, जो डोनर X का जो फंड आया है, ईयरमार्क्ड फंड, उसमें से 30,000 रुपीज का फिक्स्ड एसेट खरीदा है इस NGO ने. सो आउट ऑफ दैट 1 लाख रुपीज, 50,000 has been spent as expense towards professional fee, एंड 30,000 का एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है, इक्विपमेंट. सो अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे अंडर फंड अकाउंटिंग. ओके, तो पहले तो 50,000 रुपीज प्रोफेशनल फी जो स्पेंड किया है, विच इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. You will book that as an expense, professional fee account debit to vendor, 50,000 rupees. Professional fee debit, you will debit the expense on the income and expenditure expense side, and vendor account you will report as your current liability as creditor. Okay, this is straightforward. फिर ऑफ कोर्स ये इसके ऊपर, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर TDS लगेगा एट द रेट ऑफ 10% अंडर 194J. तो आप वेंडर अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल की तरह TDS बुक करोगे. This vendor account will get nullified, and you can also book a single entry like professional fee account debit 50,000 to vendor 45,000 to TDS under section 194J 5,000 rupees. Okay, all are with me so far? So this is a straightforward expense entry. Yeah, correct, sir. Yeah, for TDS along with TDS. Hmm. उसके बाद जब भी आप वेंडर को पेमेंट करोगे, इट विल बी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक. और अभी जब आप TDS पेमेंट करोगे 7 तारीख को ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, आप TDS अकाउंट डेबिट करोगे टू बैंक. सो फार इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप 50,000 रुपये का एक्सपेंस बुक किया है फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, यू विल बुक इट एज एक्सपेंस. बट नाउ अंडर फंड अकाउंटिंग, after you book this expense side and make all the payments, there is one additional entry that we all need to be mindful of. Okay, now let's understand this journal entry, which is quite critical. तो जो अमाउंट इक्विवेलेंट है, जो आपने खर्चा किया है 50,000 रुपये टुवर्ड्स प्रोफेशनल फी फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, you need to transfer this amount from the earmarked fund on your liability side to your income side. to as per the matching concept, क्योंकि आपने एक्सपेंस बुक किया है इनकम एक्सपेंडिचर में, करस्पॉन्डिंग इनकम भी तो बुक करना पड़ेगा हमको, राइट? जब भी 1 लाख रुपीज आया था हमको स्टार्टिंग में, हमने उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया था. तो अभी हमने 50,000 खर्चा किया है, तो हमको 50,000 का इनकम भी बुक करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट फंड अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट. ओके, सो बिकॉज वी हैव expensed 50,000 towards professional fee, you will correspondingly book it as your income, as your grant income in your income and expenditure statement.
by recognizing this 50,000 as your income. Okay, so the accounting entry would be you will debit the earmarked fund जो हमने ओरिजिनली लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट किया था 1 लाख रुपीज, उसमें से 50,000 रुपीज आप डेबिट करोगे और करस्पॉन्डिंग ग्रांट इनकम आप बुक करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50,000 रुपीज. दिस इज एन एडिशनल जर्नल एंट्री दैट यू विल हैव टू पास. ये करने से क्या हो रहा है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड 50,000 का करस्पॉन्डिंग इनकम बुक हो रहा है 50,000. सो फंड अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं ना, उससे कभी सरप्लस या डेफिसिट जनरेट ही नहीं होगा आपका, बिकॉज देर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द नॉन प्रॉफिट टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी रुपी of those unrestricted funds. Hence, there cannot be surplus or deficit that can ever be generated from the restricted funds. Okay, हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी देखेंगे इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड, बट ऑल आर विथ मी सो फार. किसी को कोई क्वेश्चन है अब तक? Is anybody typing anything here? Okay, go on. ठीक है, so let's move on to the next transaction. तो ये हो गया एक्सपेंस साइड का. अभी दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ था कि वही रेस्ट्रिक्टेड फंड में से ये एनजीओ ने एक फिक्स्ड असेट भी खरीदा था 30,000 रुपीज का इक्विपमेंट. इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे अभी. हाउ हाउ विल वी बुक इट इन अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, तो पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल एंट्री पास होगी. व्हेन यू परचेज फिक्स्ड असेट इट विल बी no since you are purchasing equipment it will be equipment account debit to vendor. इक्विपमेंट सीधा सीधा फिक्स्ड असेट में क्लासीफाई होगा आपके बैलेंस शीट में, और वेंडर आपको क्रेडिटर के अंडर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखेगा एज अ क्रेडिटर. देन व्हेन यू मेक द पेमेंट टू द वेंडर अगेन इट विल बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री. वेंडर अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट द रिसीवर एंड बैंक यू विल क्रेडिट द गिवर. ओके, यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक परचेज का एंट्री है और पेमेंट का एंट्री है. बट इसके बाद एक वन मोर एडिशनल एंट्री विल come in when you are following fund accounting. Okay, this will be the amount equivalent to the fixed asset purchased, which will have to be transferred from the earmarked donor fund account to a separate fund, which is called as fixed asset capital fund. Okay, तो जो हमने ओरिजिनली रिस्ट्रिक्टेड फंड जो हमको मिला था 1 लाख रुपीज, उसमें से 50,000 तो चलो गया एक्सपेंस के लिए, प्रोफेशनल फी के लिए. उसके बाद जो 30,000 जो हमने फिक्स्ड असेट खरीदा है, जब भी आप खरीदते हैं उसके बाद आपको वो ईयरमार्क्ड फंड से वो अमाउंट निकाल कर आपको एक नया फिक्स्ड असेट फंड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ऑन द लायबिलिटी साइड इटसेल्फ इन योर बैलेंस शीट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 रुपीज. ओके ओके, वंस दिस इज डन देर इज वन मोर एंट्री दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, इज दैट डेप्रिसिएशन. अभी फिक्स्ड असेट तो खरीदने के बाद आपने वो ईयरमार्क फंड से फिक्स्ड असेट कैपिटल फंड में डाल तो दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा आपका वो जो फिक्स असेट. तो सपोज ये जो इक्विपमेंट आपने खरीदा है, जो एनजीओ ने खरीदा है, उसके ऊपर WDV मेथड के अंडर 15% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, सो 30,000 रुपीज का 15% कम्स टू 4,500 रुपीज. So when you book depreciation, it will be a very straightforward journal entry. Depreciation account debit to fixed asset. Depreciation being expense, you will show it as your expense on the income expenditure, and equipment you will show it as your reduce from fixed asset in your balance sheet. This is quite straightforward entry. But इसके बाद जब भी आप, क्योंकि अभी आपने depreciation book किया है on your income and expenditure on the asset that has been purchased from restricted funds, इसका करस्पॉन्डिंग इनकम भी आपको बुक करना पड़ेगा इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्योंकि फंड अकाउंटिंग का प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्या है, देयर कैन नेवर बी सरप्लस और डेफिसिट व्हेन इट कम्स टू रिस्ट्रिक्टेड फंड्स. तो क्योंकि अभी आपने डेप्रिसिएशन बुक किया है, आपको उसका करस्पॉन्डिंग इनकम भी बुक करना पड़ेगा. हेंस दिस एडिशनल जर्नल एंट्री विल गेट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू द डेप्रिसिएशन बुक्ड. ये आपका दिस विल हैव टू बी ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड असेट कैपिटल फंड टू योर इनकम साइड. ओके,
So to the extent of the depreciation amount that we just spoke about, 4,500, once we have booked it in our income and expenditure expense side, उसका corresponding income जो हमको book करना है, that you will transfer from fixed asset capital fund, which we just created, in the 2 slides before, from earmarked fund. Okay, so you will debit fixed asset capital fund. Earlier you had credited 30,000, out of which you will debit to the extent of 4,500, and then you will book corresponding income by the name fixed asset capital appropriation. This is nothing but just treated as income, corresponding income that you are booking against depreciation for the fixed asset. Okay, fixed asset capital appropriation will be reported on your direct income side in your income and expenditure, and fixed asset capital fund हमने जो लायबिलिटी साइड में जो बुक किया उसमें से रिड्यूस होगा. ओके, अभी हम इसका जो हमने अकाउंटिंग जर्नल्स अभी जो डिस्कस किए, इसका हम फाइनल ट्रीटमेंट देखते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कैसे दिखेगा. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट होल्ड ऑन फॉर couple of 2 more slides and then we will take questions. But it is for us to, it is important to understand how this will end up looking in our income and expenditure and balance sheet now. ओके, तो आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा. ओके, जो हमने पहले जो बात की थी, 2 लाख रुपीज जो हमको इंडिविजुअल से आए थे, तो वो तो आपका डायरेक्टली इनकम दिखेगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में इनकम साइड पे, बिकॉज दीज आर अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, मनी दैट यू हैव रिसीव्ड. ओके, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल में देखा ईयरमार्क फंड जो 1 लाख रुपीज आया था, उसमें से प्रोफेशनल फी हमने पे की थी, तो हमने उसको एक्सपेंस साइड में बुक किया. उसके करस्पॉन्डिंग हमने ग्रांट इनकम भी बुक किया बाय ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट फ्रॉम ईयरमार्क्ड फंड्स फ्रॉम आवर बैलेंस शीट. सेम वे जब भी हम डेप्रिसिएशन बुक किए, हम जो फिक्स एसेट खरीदा 30,000 रुपीज का, उसके ऊपर 15% पे डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करके बुक किया, इट विल गेट बुक्ड ऑन द डेबिट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, बट उसका करस्पॉन्डिंग fixed asset capital appropriation account will also get credited on the income and expenditure statement as income. So when it comes to restricted funds, 50,000 debit, 50,000 credit, 4,500 debit हुआ तो उसके अगेंस्ट ये भी क्रेडिट हो गया. Okay, this is how our income and expenditure extract will look like. And then whatever remains balance, balance that remains 2 lakh rupees, because we have not ended up spending any money out of the donations that we had received as unrestricted funds. उसमें से हमने कुछ भी पैसा यूज नहीं किया है. So this entire 2 lakh rupees will become your surplus for this financial year. Okay, so what is coming out as surplus is nothing but the unrestricted funds, the unutilized unrestricted funds are ending up in your surplus kitty, which will get transferred to your balance sheet अंडर रिजर्व एंड सरप्लस. यहाँ पे दिखेगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफर होके आपके रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आपको पहले 2 लाख रुपीज यहाँ पे सरप्लस आपको दिखेगा. ओके, नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट हाउ विल आवर ईयरमार्क्ड फंड जो हमने बनाया था वो कैसे दिखेगा और फिक्स्ड एसेट फंड कैसे दिखेगा. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड विद इन ऑफ द सेम एग्जांपल. तो जैसे हमने पहले बात की थी, हमको जब भी 1 लाख रुपीज आया था फ्रॉम दैट रिस्ट्रिक्टेड डोनर एक्स, आप पहले तो ईयरमार्क फॉर डोनर एक्स बनाओगे आपके बैलेंस शीट में एज 1 लाख रुपीज. उसमें से आपने 50,000 रुपीज पे किया. ओके, सो दैट विल गेट reduced फ्रॉम दिस ईयरमार्क फंड फर्स्ट. इसका एक इफेक्ट इधर है, तो दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने देखा एक्सपेंडिचर साइड पे. फिर आपने इक्विपमेंट खरीदा 30,000 रुपीज फिक्स्ड असेट, तो आपको पहले तो इधर रिड्यूस करके दिस अमाउंट विल गेट ट्रांसफर टू फिक्स्ड असेट कैपिटल फंड दैट वी डिस्कस्ड, राइट. सो ये 30,000 will be reduced from this earmarked fund and go into fixed asset capital fund, because you have used this restricted money towards purchase of fixed asset. ओके, उसके बाद तो ये ट्रांजेक्शन होने के बाद आपका ईयरमार्क फंड का बैलेंस दिखेगा सिर्फ 20,000 रुपीज, विच इज रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल कैश बैलेंस पेंडिंग ऑफ डोनर एक्स.
1 लाख रुपीज आया था, आपने 50,000 30,000 रुपीज खर्चा किया, तो आपको 20,000 रुपीज ही डोनर एक्स का बचा है, विच विल गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ what exactly is the restricted funds that you are which are remaining unspent. Okay, आपका फिक्स्ड एसेट फंड जो आपने बनाया 30 लाख रुपीज, जब भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हमारे असेट साइड पे ये 30 लाख रुपीज दिखेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट। फिर आप उसको डेप्रिशिएट करोगे, इसका एक इफेक्ट आप एक रिड्यूस करोगे फिक्स्ड असेट से, और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड पे हमने बुक किया था। लेकिन एडिशनल एंट्री जो हमने फंड अकाउंटिंग में जो बात की, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस फिक्स्ड असेट कैपिटल फंड नाउ, यू विल ऑल्सो हैव टू बुक करस्पॉन्डिंग इनकम इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो इनकम आपको यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दिस फ्रॉम दिस फिक्स्ड असेट कैपिटल फंड यू विल ट्रांसफर 4,500 रुपीज एंड you will transfer to your income side in your income and expenditure. So that is how your balance in fixed asset capital fund, which is 25,500 in this example, will match with the actual net value of fixed asset which lies in your balance sheet. Hi, may I just ask for a clarification? So I understood everything till the point, till the last point, which is why would the depreciation be transferred to income? Yeah. So because this fixed asset has been purchased from restricted funds, so restricted fund का concept ये है कि every expense के अगेंस्ट आपको इनकम बुक करना है। देखो, जब भी आपको 1 लाख रुपीज आया रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, दैट टाइम यू हैव नॉट टेकन इट इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यू हैव शोन इट हियर इन योर लायबिलिटी साइड 1 लाख रुपीज, Correct. राइट। ये 1 लाख रुपीज में से आपने 30,000 रुपीज का इक्विपमेंट खरीदा। वो इक्विपमेंट खरीदने के बाद भी आप इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं किए। इनकम एक्सपेंडिचर ये अब फिक्स्ड असेट परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा असेट साइड पे। ओनली व्हेन यू बुक डेप्रिसिएशन यू आर बुकिंग एन एक्सपेंडिचर in your income and expenditure, okay, for the asset that was purchased from restricted grant. Now because you have booked it as expense, आपको corresponding income book करना जरूरी है उसका, based on the fund accounting concept. Okay. And to do that, ये 4,500 rupees का आप income transfer कर रहे हो to match it with the depreciation that you have booked correspondingly. Because in my mind, I mean, I think somewhat I got it, but in my mind, depreciation is, I can't, I mean, logically, I can't see how something that's depreciating is being booked as an income. Yeah, so think like this कि okay, think like this कि 1 लाख रुपीज आपको पहले रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आए, उसमें से आपने 30,000 रुपीज फिक्स्ड असेट खरीदा। खरीदने के बाद भी आपने अब तक एक्सपेंडिचर बुक ही नहीं किया है आपके बुक्स में, इनकम एक्सपेंडिचर में। ओके, 1 लाख रुपीज आपको यहाँ पे देखेगा लायबिलिटी साइड पे, और 30,000 रुपीज आपने फिक्स एसेट जो खरीदा वो आप ट्रांसफर करोगे थ्रू फिक्स एसेट, इट विल गेट ट्रांसफर्ड हियर टू फिक्स्ड एसेट कैपिटल फंड, एंड करस्पॉन्डिंगली आपने फिक्स्ड एसेट सिर्फ खरीदा है। अब तक ये पूरा ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तब तक हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को टच भी नहीं कर रहे अब तक। The only time that we are touching income and expenditure is through this depreciation entry, and depreciation is nothing but apportionment of cost of fixed asset in that particular year. Okay, now because we are expending or showing it as expense in our income and expenditure, based on the concept of fund accounting matching concept, आपको corresponding उसका income book करना जरूरी है, क्योंकि if you don't do this, okay, let's think like this. If you don't book corresponding income, you will end up not reporting income to the extent of 30,000 rupees, which pertains to fixed asset purchased from restricted funds. Okay, I think the clarity is better now. Thank you. Yeah. Hi, sir. Yes, Present we are following when we will get the fund from donors. Now we will directly booking under income and expenditure. If there are any unutilized fund in the March end, we are directly moving to surplus. Is that not the correct way?
because this is little complicated to entries. Too much entries हो जाए. Yeah. See, I mean, it's about doing. तो आप क्या कर रहे हो? What you are doing is that you are booking it as income and then routing it to balance sheet, liability Yes. side. Hmm. But the right way of doing it is that first booking in your liability side, because ये 1 lakh rupees that you have got, it is your obligation. It is your liability. There are conditions attached to it. Okay. Hence, the right. See, at the end, net effect will remain same in both the scenarios. Yeah, but this is correct way or not? Yeah, we need to change the Yeah, entries. the correct way is this. First taking in your liability side and then moving to income and expenditure. That is the correct way. This is the correct way, but that is not the correct way. Or any It is. See, yeah, I mean, if you're talking about accounting accuracy, then this is the correct way. Why? I'll just try to explain it in another way. Suppose you are closing your books, say on, for 31st December, example. So then what you will end up doing there again is to calculate whatever is pending from, after 31st December, and then you will transfer it in your balance sheet. I'm assuming that you will do that, right? If yes, you're not doing that, then it is incorrect. Instead, if you're already booking it as liability in the first place, then it is more prudent to book corresponding income to the extent from April to December. Okay, rather than going the other way around. I mean, this is just one way to look at it. Like I said, net effect will remain same. आप ये thank पहला करो या वो पहला करो, it will not change as long as you are doing both things together, at the end. एक ही करके आप छोड़ रहे हो, then it will create trouble. Then it will be a wrong reporting. you. Okay, thank you. Yeah. किसी के सवाल है इसके ऊपर? ये समझा, ये ट्रीटमेंट समझी फंड अकाउंटिंग की, दो स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग फंड अकाउंटिंग in your current organizations, or even if somebody is following fund accounting, is this how you are doing when it comes to expenditure or no fixed asset purchases done from restricted funds? You can just type yes, no, not sure. Those who are following fund accounting, are you following in the same way that we just discussed? Okay, HP has written yes. ओके, फरीन नॉट श्योर. जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको समझा, ये कॉन्सेप्ट समझा. सी, दिस मटेरियल विल बी शेयर्ड विद एवरीवन आफ्टर द सेशन. If you have some doubts, or if you need more clarity, I would strongly suggest that you go through these slides again to understand this concept, and the dual effect concept when it comes to income, expenditure, and balance sheet. It will be very helpful from a knowledge perspective that you understand. And if you are planning to implement, if some organizations, जिस organization follow नहीं कर रहे आज के दिन पे fund accounting, but if you are planning to implement it in future, you need to be aware of this methodology before you actually implement on ground. Okay, Ankush, Kiran have responded. Okay, perfect. So yeah, we still have like 7-8 minutes. I'll quickly touch base upon the some key points that we all need to be aware of. तो जब भी हम फंड अकाउंटिंग की बात करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, जब भी हम डोनर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनाते हैं, तो वी शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस साइड ऑफ थिंग्स, बट ऑल्सो फिक्स्ड असेट्स जो परचेज होते हैं विच गेट रिपोर्टेड इन योर बैलेंस शीट, इवन दैट शुड आइडियली गेट रिपोर्टेड इन योर डोनर यूटिलाइजेशन, बिकॉज पैसा तो चला गया है, राइट, डोनर का. वी हैव स्पेंड दैट मनी. सो व्हेन यू क्रिएट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स, you typically report it as funds utilized. जेव्हा तुम्ही हे फॉर्म साईन करून डॉक्युमेंट देणार तेव्हा Yeah, then there are also adjustments like prepaid expenses, advance paid to creditors, security deposits. अब अगर हम कोई प्रेमाइसिस रेंट पे लेते हैं और हम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं टू द लैंडलॉर्ड, तो ये पैसा तो हमने पे कर दिया है टू द लैंडलॉर्ड. सो एट सम प्लेसेस
some donors are okay with such kind of deposits also to be given. तो in this case आपको utilization report में उसको report करना पड़ेगा. It's not just about income and expenditure side, but also certain adjustment entries and fixed assets and other assets that you report on in your balance sheet asset side that needs to be taken care of. One more important point is that ये मेथोडोलॉजी से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बना लिए एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बट when you're creating donor utilization reports or you're compiling data for form 10BD which is again on cash basis, right? आप कैश बेसिस पे 10 फॉर्म्स इशू करते हो, 10B इशू करते हो टू द डोनर्स. तो आपको इसके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स मेंटेन करने जरूरी है. A lot of times these questions come up at the time of audit where auditors ask us for reconciliation क्योंकि numbers match नहीं हो रहे, what we have reported in our tax audit report or ITR or form 10BD or in the cost centers that we use in softwares like Tally. वो numbers and our financial statements के numbers may or may not match because of multiple approaches that one can follow. Some are following fund accounting, some are not following fund accounting. It could be various permutation combination. So whatever you guys are doing, some are following cash basis accounting example. तो इस केस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना reconciliation statements should be kept on record so that when time comes to explain to your auditors or tomorrow if any scrutiny happens or any assessment happens from income tax authority or if you are registered under FCRA then अगर Ministry of Home Affairs से कोई scrutiny होती है, that time you have all the documents on record which are helpful in when you try to explain to the authorities. So from that angle, it is important that reconciliation statements also maintained at the back end. Okay, and if you're implementing this fund accounting for the first time in your organization, so some important points that we all need to remember is that आपको reclassify करना पड़ेगा आपके corresponding previous year's expenditures, income expenditure, fixed asset fund, earmarked fund अगर आपने create नहीं किया तो आपको create करना पड़ेगा. So there will be some reclassification, regrouping of ledgers or the line items that you report in your financial statements. ओपनिंग बैलेंसेस आपको खड़े करने पड़ेंगे earmarked फंड्स के, फिक्स्ड एसेट कैपिटल फंड्स के, टू मेक इट कंपेरेबल ईयर ऑन ईयर. Proper disclosure will be required because you will be changing the accounting methodology in your first year. So it is important that such disclosure are also made in your notes to accounts along with disclosure on regrouping and reclassifying. And we would strongly advise that you discuss this with your auditors as well, to align whatever reporting you have done already for the past years in your ITR tax audit report and how you plan to do it for the future. Auditors and your organizations are on the same page when it comes to fund accounting. So with that, we have finished with the session. किसी के कोई questions है? We will, before we move on to that small quiz that we will be doing in each of the sessions. किसी को कोई questions है इसके ऊपर, कोई clarifications? Anybody would like to share any thoughts or anything that you found useful, not useful? Yes, Doit, I have a question. Yes, Anurag. I want to know what is how do we do the accounting for fixed assets purchased from project funds? Correct. So when you say project funds, Restricted funds. restricted funds you are referring to, is it? Yeah. Correct. So we just discussed, right? In that example, there was this 30,000 fixed asset equipment that was purchased, right? It was in that same example, how we booked it as fixed asset purchase first and then moving fixed asset capital fund from earmarked fund in your liability side and then booking depreciation and with a corresponding income against the depreciation. I mean, that's the summary of how we will do it. I would suggest, Anurag, if you can, after this session, if you can go through those slides again to understand this fixed asset. And if you're still having doubts or any clarification is needed, I'm happy to help you, understand this better. Since we are towards the end of this session and there is one small quiz, I would strongly recommend that you go through these slides and then we can connect. Is that okay with you? Yeah, sure. Yeah, yeah.
Yeah, Raju has asked this question. Can you share information on which NPOs are using? तो ऐसा कुछ नहीं है राजू, no, even be it large or small, it's a recommended practice by ICAI and it's a best practice when it comes to fund accounting. So lot of organizations that we work with do follow, fund accounting. Okay, anybody has any more questions? Or else we can just have a small quiz. The teams would remain the same. जो टीम हमने फॉर्म किए थे, आपको सबको याद है टीम 1, टीम 2, टीम 3 कौन थे, कौन कौन सी टीम में था? रवि, वो अपने पास लिस्ट है तो वी कैन जस्ट पोस्ट इट इन द चैट ना? Yes, I have the list. I'll just post it. Yeah. Yeah, I think so. Everybody is aware, right? Is there anybody who is not aware which team they Please belong to? rename yourselves. I think please rename yourselves. It will help your team members to identify and Okay, uh, Kusum has forgot. Maybe you can check I've just Kusum. added the list. I've just added the list. Please rename yourself very quickly. We don't have much time. I mean, we are already over time. So team one, I think Rohit, we can start the first question. Yeah, You are renaming yourselves. Team yeah. team Ayushi, Ankush, Karan, Kusum, Monica is not here. Rija, Rani and Sachin. ये टीम वन का क्वेश्चन है. या ये टीम 1 का क्वेश्चन है और हर एक टीम को दो दो क्वेश्चन है ये बार. सो विच एडजस्टमेंट एंश्योर्स एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड आउट ऑफ द बिलो 4 ऑप्शंस? इज इट प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कैपिटलाइजेशन, रिजर्व क्रिएशन और फंड ट्रांसफर? Provision for expenses. Correct, perfect. A, right answer. Yeah, I hope somebody is recording the scores, huh? I am. Yeah, yeah. Next question for team 2. Which fund reflects unrestricted accumulated surplus? Is it corpus fund, earmarked fund, general fund, or capital reserve? Team 2. Team two is Ajay, Anurag, Kiran, Meena, Naveen, Raju, Rashmi. Unrestricted accumulated surplus general fund. Yes, that's right. It's general fund. 10 marks. 10 marks, yes. This question is for team 3. So, dividing the life of an asset into its useful life for depreciation is based on which accounting concept? Is it going concern, matching, periodicity, or realization? ये सेशन 1 and 2 बोथ कंबाइंड का एक क्वेश्चन है. टीम 3. Realization. Team three is Alisha, Going Pareen. concern. Going concern, I think. ऑलरेडी 2 आंसर्स मिले हैं, रियलाइजेशन एंड गोइंग कंसर्न. Decide एक करो फाइनल आंसर. आंसर बोलिए, फाइनल आंसर. Going concern. Final answer, going concern. Okay, the correct answer is periodicity. Okay. Oh, it's based on which accounting? Yeah, no, since we are dividing the life of an asset based on financial year, every accounting period के हिसाब से हम उसको life of the asset ये करते हैं, right? So, and we calculate depreciation on every year based on periodicity concept. Okay, so moving on to the next question for team 1. But Prior Rohit, period. why it is not A and C? Yes, because ongoing is also मतलब accounting assumption. Okay, why it is not those? Because the right answer is periodicity. But again, I'll explain this maybe subsequently. Let's complete this quiz. Question 4 to team 1. Prior period expenses should be what? Ignored, adjusted against capital, separately disclosed, or treated as current expense. Separately disclosed. Yes, that's the right answer. Team 2, depreciation on a project funded vehicle says 25,000 rupees. What is the correct fund accounting treatment? Debit general fund, debit fixed asset capital fund, debit grant income, or ignore depreciation? When we say project funded vehicle,
रिस्ट्रिक्टेड फंड में से अगर आपने व्हीकल खरीदा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो 25,000 रुपीज, तो आप करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी जो हमने डिस्कस किया था उसके आप डेबिट क्या करोगे आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस? Fixed asset capital fund? Yes, that's the right answer. I hope it has been answered by team 2 person only. Anurag, I think you answered, right? You're Yeah. you're in team 2 Anurag is itself, right? team two. Yeah. Yes, Okay, Anurag is team. perfect. Yes. Last question for team 3. Grant received from next year's activities, but recorded as income in this year will result in what? Understatement of surplus, overstatement of surplus, overstatement of liabilities, or there won't be any impact? Overstatement of surplus. Yes, that's the right answer. Absolutely. Perfect. This brings an end to today's session. And yeah, thank you for attempting that quiz.